Hey there, everyone. Good evening. Myself, Shrey Dubey. I'm the team lead of Pheonix7, and the problem statement we have chosen is designing an app for screening the possible mental health issues in adolescents and PWDs. We all belong to same institute, named Bila Institute of Technology, Durg. The theme name that we have chosen is MedTech, Biotech, and Health Tech. Going further, this is our idea. This is the app named Pixie, and as you can see, this is our mascot. So the base, what's the app is all about is it's user-friendly virtual friend. That means कि ये जो app है ये actually user और user से के साथ रहता है. It will go through its progressions. ये उसको as a companion फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स या जिसको डिप्रेशन है, जिसको किसी टाइप की मेंटल इश्यूज है, उनके साथ एज अ कंपेनियन रहता है. द ऐप key features, if you ask me, like going above key features, we have the app is actually very interactive. अभी मार्केट में जो भी एप्स हैं दे आर नॉट वेरी वेल इंटरेक्टिव इन नेचर. मतलब वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मुझे अपने बारे में नहीं बताते. दिस ऐप विल ऑल्सो start talking first, like आज मेरा दिन ऐसे गया, आज मैंने ये किया, what about you? So in that way the app is very interactive for PWDs. जैसे अगर कोई ब्लाइंड है तो ऐप में एक्चुअली वॉइस प्रेफरेंस का एक फीचर है कि ऐप आपसे बात कर सकता है, ऐप की खुद की वॉइस है, एट द सेम टाइम तुम हे पिक्सी बोल के ऐप को एक्टिवेट कर सकते हो. Going on the therapist market. So ऐप में एक्चुअली बुक योर अपॉइंटमेंट विद थेरेपिस्ट का एक ऑप्शन है जिसमें आप फ्री एंड बोथ पेड थेरेपिस्ट को बुक कर सकते हैं. So it's a good market even for both therapist and therapist and the users. It also acts as a link between the therapist and the user. ये आपको कॉल की सुविधा देता है एंड बात करने की सुविधा देता है. मूविंग ऑन. As described by our team leader, our target audience is adolescents and PWDs. To mention a few problems, there are people who are suffering from post-war depression, students who are going to quota, जो इतने बड़े बड़े ख्वाब लेके जाते हैं जेई नीट का, और वो जब ख्वाब पूरे नहीं हो पाते तो वो डिप्रेशन में स्लिप हो जाते हैं. और उस डिप्रेशन में स्लिप होने के बाद उस डिप्रेशन से उभरने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, या तो वो उससे कभी उभर ही नहीं पाते. एंड प्रेजेंटली वी हैव द केस ऑफ post COVID depression. And come on, guys, this is India. For society and people, there is no such thing called depression. So, what's our main aim? Our main aim is to bring a user friendly virtual assistant to provide these people a comfortable virtual environment so they can feel comfortable to talk to. So, moving on to the first key feature is our basic counseling session. So our app will provide a user-friendly virtual environment so that the people who are suffering from depression, anxiety will feel comfortable to talk to. कि यार ये तो यार मशीन है, ये अपने को जज नहीं करेगा like other people. And based on DAS scale, our app will ask questions to the user, like normal questions to the user. आपका दिन कैसा बीता, आपने क्या क्या किया, and it will not be a one-way conversation. The Pixie app will also go, हाँ मेरा भी दिन ऐसा बीता, पता है मैंने क्या क्या किया. And based on the user's response, it will prepare some analytics on that data and proceed accordingly. And the second feature is it accompanies lonely people, the people who have no one to talk to. So it will act like a friend to the user, like providing them assistance in their day-to-day activities, motivating them with daily codes and special wishes on their birthdays, etc. Now, to further describe the key features, I would like to call Vishwadeep. Yeah. So as described by the Apu, uh, um, uh, I further it describe it in detail, like how it works. Like it is a user-friendly virtual assistant. So yeah, it whenever we log in into the page, ये हमें motivational quotes देगा जब भी हम इसके landing page पर जाएंगे, या जब भी हम log in करेंगे तभी हमें motivational quotes देगा या अच्छे मोटिवेशनल इमेजेस दिखा सकता है. एंड ये हमें योगा एंड मेडिटेशन सेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है टू रिलीव सम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन. एंड सम एक्सपर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा इफ नीडेड, लाइक इन चैटिंग और इन कॉल. एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है करेगा. एंड इसमें एक इनबिल्ट फीचर रहेगा टू डू लिस्ट का.
जिसमें हम पूरे दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिसको हमें अकम्प्लिश करना है, और उसे हम टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। और टू डू लिस्ट क्या करता है, मतलब उसमें उसका एक साइकोलॉजिकल चीज होता है कंप्लीट करने का, कि जैसे ही हम कुछ भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो एक साउंड आता है कंप्लीट करने का। तो जैसे वो साउंड आता है कंप्लीट करने का, एक हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे डोपामीन कहते हैं। एंड वो जैसे ही रिलीज होता है, हमें अच्छा फील होता है। इट्स अ गुड फील गुड हार्मोन। सो ये डिप्रेशन को रिलीव करने में बहुत कम आता है ये। एंड ये हमें एनालाइज करेगा ऑन द बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस इट आस्क। एंड लाइक वो हमारी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी कैसी पर्सनालिटी है, हमारा किस प्रकार में इंटरेस्ट है। एंड उस बेसिस पर हमें मूवीज रिकमेंड करेगा, मूवीज, म्यूजिक एंड गेम्स रिकमेंड करेगा खेलने के लिए। एंड समटाइम्स वर्कआउट बोलेगा कि आप इस टाइम वर्कआउट करो, आप इस टाइप का मूड आपका है। लाइक वो मूड एनालिसिस करेगा पहले, तो उसके बाद वो रिकमेंड करेगा। एंड समटाइम रेगुलर बेसिस पर, नॉट सब टाइम रेगुलर बेसिस पर, वो हमें वॉकिंग करने पर भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि बहुत देर बैठे बैठे हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन आ सकता है। तो या वो हर टाइम टू टाइम इंटरवल पर, लाइक 1 to 2 आवर्स में, वो हमें वॉकिंग रिकमेंड करेगा टू कीप आवर मूड फ्रेश। एंड सो इट्स अ वॉइस असिस्टेंट। सो it responds to our saying, like when we call, "Hey Pixie," so it responds to us like, "Hello, someone, how can I help you?" or "How's your day?" and something like this. So further on, I will like to call Shrishti to continue with the objective solutions. Thank you, Vishwadeep. So, our objectives are first to allow self registration and screening of possible mental health issues, which is done by mode detection by user interaction. Our virtual friend Pixie here will ask you a few questions based on DAS, which is depression, anxiety, and stress scales, and it will respond accordingly. मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पीटीएसडी जो भी है, आपको एनालाइज करने में Pixie help करेगा. Our next objective is to initiate a secure chat in their own language with professional at any convenient time. And for that, we have in-app conversation feature, keeping the user's anonymity intact. You don't have to tell your name, आप gender कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा. आपको बस अपनी प्रॉब्लम बतानी है. कॉन्वर्सेशन में सिर्फ आपकी प्रॉब्लम बतानी है और कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी पड़ेगी. Our next objective is to provide real-time database location, statistics, and follow-up services and utilization of local resources, which will be done by using Google Maps API. अगर आप bookworm हो, तो Pixie will suggest you a nearby library. अगर आपको career counseling चाहिए, तो कोई nearby counselor suggest कर देगा. And our next objective is to provide an option for callback at any convenient time slot chosen by applicant. If you want to reach out to a professional and you want to book an appointment, Pixie will help you. And अगर आप reach out नहीं कर पा रहे हो, then Pixie will reach out to you. Thank you so much. Moving on to our next topic, technology stack, I'd like to call Rashmi. Okay, so now in this project we are going to use some technologies which are Android Studio. We will be using Android Studio for app development and for front end purpose. Now, second one is Firebase, which we will be using for app messaging. And Java is our programming language that will be used in Android Studio. Python and TensorFlow will be used for the machine learning, machine learning backend, and for NLP, that is natural language processor. And Ruby is for framework purpose. And for database and server management, we will be using PostgreSQL. App notification feature. Now moving on to the next slide. Our dependencies are all-time internet connection. We need internet connection for interaction with of user with our app and with our expertise.
And then expert help, as we have already discussed above that previously, that we need experts help for figuring out if the user is in very mental health severe condition, और ऐसे कुछ अगर किसी प्रॉब्लम में अगर हमारा यूज़र फंसा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट की, तो यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से भी हेल्प ले सकते हैं वाया कॉलिंग और चैट. And then last one is device access permission. We need device access permission so that we can track users' behavior. Thank you. And I'll stop here. And now I will call Nevanshika. She will take over from here. Now, for explaining the flow of working of our app, I'll explain you about the use case diagram. So here we have our use case diagram. In this, the user will first log in or register in our app, and then after authentication, account will be activated. And then uh, activation of account is after the activation of account, the general in-app conversation will start. That is, Pixie and user will start talking like my teammates said about all day, like कि वो पूरा दिन कैसा रहा etc. General talking. And in between, Pixie will ask certain questions based on the DAS scale. लाइक कि वो यूजर को बिल्कुल पता ना चले कि कोई उसका मतलब एनालिसिस या मॉनिटरिंग हो रही है उसकी. स्टिल बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन द डास्क स्केल, जिसके थ्रू पिक्सी विल एनालाइज कि उस पर्टिकुलर यूजर को कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है कि नहीं. एंड देन इफ नहीं रही, देन नॉर्मली जैसे चैटबॉट या फ्रेंडली वर्चुअल असिस्टेंट जैसे वर्क करेगी पिक्सी. बट इफ एनी साइन ऑफ डिप्रेशन इज शोन बाय द रिजल्ट एनालिसिस ऑफ दैट डास्क स्केल क्वेश्चंस, देन उस यूजर का डेटाबेस क्रिएट होगा, मतलब उस यूजर के सारे इन्फो कलेक्ट करके. एंड देन दिस डेटाबेस विल बी स्टोर्ड इन द क्लाउड. बट हमें इस ऐप में एनोनिमिटी मेंटेन रखनी है. Hence, we will use alias name for that user. Along with that alias name, we use unique identification number. All this information will be stored in cloud. The second actor we have in our use case diagram is expert. Expert will have the access to the cloud for viewing the things about viewing the details about the user. दैट इज कि उसको किस टाइप की इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, और विच काइंड ऑफ डिप्रेशन दैट यूजर इज फेसिंग. It records all the data. The expert will have all the data and all the result of the task scale so that वो अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लें experts. Then again coming back to that sign of depression, after that basic counseling will be going on if depression raha. Then in serious cases like in extreme conditions, if the user कि वो कुछ action लेने वाला है and बहुत ही last level of depression में बहुत severe level है, तो हम दो option इसमें रखे हैं: in app chatting with expert and second callback option. Like if कि user कुछ भी करने का उसका मन नहीं, एकदम डिप्रेस्ड एकदम बैठा हुआ, तो वो हम उस पर्टिकुलर यूजर के टाइम स्लॉट, चोजन टाइम स्लॉट, जब भी वो फ्री है, वो एक्सपर्ट से इन ऐप कन्वर्सेशन कर सकता है. एक्सपर्ट उसका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इफ ये भी पॉसिबल नहीं है, वो मतलब कुछ इस तरीके का एक्ट करने वाला है कि मतलब लाइफ एंड हो गई एंड ऑल, तो वो ये इस तरीके के एक्शन अगर लेने वाला है, तो हम कॉल बैक ऑप्शन भी रखे हैं. ये कॉल बैक ऑप्शन 2 वे है. अगर यूजर को बहुत नीड है बात करने की, तो वो डायरेक्टली एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं. उनके पीए कॉल पे कर डायरेक्ट एक्सपर्ट कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे. एंड देन ये पॉसिबल नहीं यूजर को किसी से बात नहीं करना, तो हम डायरेक्ट
एक्सपर्ट से कॉल करवा, मतलब एक्सपर्ट विल कॉल दैट यूजर, उनके यहाँ से कॉल जाएगा। जरूरी नहीं है कि यूजर को ही अप्रोच करना है। इन दी सीवियर केसेस एक्सपर्ट विल कॉल द यूजर एंड देन हम उसके जो भी वो एक्शन ले रहा है हमें उसको स्टॉप करा के उसका प्रॉपर काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सीवियर केसेस के लिए बहुत रिक्वायर्ड रहता है बोथ वे कॉल बैक ऑप्शन। Hence, we provide this too, both for the mental issues which in both conditions like adolescents and in any age group, and also with person with disabilities. Thank you. Now I would like to call our team leader Shrey. Yeah, thank you, Neil and Shika. Thank you for calling me. Thank you for everybody explaining the project. Thank you for listening while listening it. Uh, Hope you like our project. See you there, right? Thank you. Good night. Hey, Pixie here. If you are watching this and you don't feel good about yourself, don't worry, you are loved. It's just your brain being mean to you. Take care.